What's up guys, welcome back to my channel. You can see there's a lot of greenery behind me because आज हम आए हैं चिकमंगलूर में, जो कि है बैंगलोर से 3-4 घंटे पे। चिकमंगलूर इज़ बेसिकली अ लैंड ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशंस। बहुत सारे कॉफ़ी प्लांटेशंस है यहाँ पे, बहुत सारी ट्रीज़, बहुत सारी ग्रीनरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं विंटर्स में आई हूँ, सो ठंडी भी है। इट्स फीलिंग रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे होम स्टेज बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैं आई हूँ इस होम स्टे पे जिसका नाम है सिरी होम स्टे। सो आई टेक यू थ्रू दिस ट्रिप ऑफ 2 days टू चिकमंगलूर। कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। एंड येस, बिफोर दैट अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो देन प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon so that whenever I'm uploading any new video you'll get the notification. All right, now without wasting any more time, let's get to Chikmagalur vlog. आप मेरे पीछे ये houses देख सकते हो, cottages या mini villas I would say, और इसमें मैं stay कर रही हूँ अब। Welcome to my room, and that's my beautiful room, and they had quoted it for 2200 rupees. However, negotiate करके 1800 पे आ गए, जिसमें they are including breakfast, snacks and dinner. Lunch नहीं है. However, in terms of food, it is not that great. At the back side of the room we have this big lawn, so you know सुबह ये ऐसे door वहाँ पे खुलता है, which looks pretty good. I think 1800 में it's a pretty good deal. However, in terms of food you cannot expect that great. It's like okay. I think it's a medium good homestay and its name is City Homestays. So if you want to check it out, definitely you can check this. I'll put the link in the description. मॅडम कसं वाटतं तुला इथे दीदी? हाउ आर यू फीलिंग? खूप छान. हाउ इज द प्लेस? खूप छान. So I have come to Budangiri hill station and it was around half an hour from Chikmagalur. Oh my god, there is a monkey here behind. मुझे बहुत डर लग रहा है. Oh! और वो रोड सारे बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, ऐसे पूरे घाट. सो आई वॉज फीलिंग अ बिट स्केयर, बट या वी हैव रीच्ड एट द माउंटेन और फिर एट द हिल टॉप, एंड वहाँ से देर आर 200 स्टेप्स डाउन स्टेयर्स, देर इज़ अ वाटरफॉल. It's at such a height. पूरे clouds है, in fact clouds के भी ऊपर आ गए हम, and there are so many monkeys. So एक monkey he came and he just snatched on my jeans. इतनी डर गई मैं, मेरा कैमरा गिरने वाला था, but thankfully did not happen. But थोड़ा डर लग रहा है, but yeah it's beautiful. कहाँ नीचे है वो? हाँ नीचे है. ये बाबा बुडंगिरी मानिक का झाड़ा. अच्छा. Thank you aunty.
So next day we checked into a new resort जिसका नाम है Bangalore Exotica Luxury Resorts and Spa. This is how it looks. So इन्होंने बहुत सारी greenery बनाने की कोशिश की है, but that's not the natural one. And look wise it's good. It was pretty nice because काफ़ी reasonable था. चल So I came to the market. बहुत ज़्यादा अच्छा है, famous है, and they have a lot of spices and sandalwood, coffee, because all of these things are grown over here. इसलिए ये यहाँ पे काफ़ी wholesale price में, and you get natural things. And I'll show you a few things of it. तो मैं इस शॉप में आई हूँ जिनके पास काफ़ी सारी चीज़ें. So let's have a look at it. सैंडलवुड की बहुत सारी चीज़ें दिखेगी आपको यहाँ पे. Powders, there are lot of fragrances and lot of perfumes, ittar vittar, all these things are over here. While traveling from Bangalore to Chikmagalur or returning back, you can take a stop at this beautiful temple in Bangalore. It has so many old carvings. केशव, सकाल चन्ना केशव, ये तो 12th सेंचुरी का है. मंदिर बनाकर 900 साल हो गया. ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए टाइम लगा 103 साल, 103 वर्ष, 3 पीढ़ी. सर आपको लगता है सडनली पूरा मंदिर दूर से देखने के लिए एक ही पत्थर, बट ये रॉक टेम्पल नहीं मैडम, पीसेस. देखिए टुकड़ों को लेके आकर कारीगरी करके पत्थर के ऊपर पत्थर को जुड़ा हुआ है. जैसे कि इंटरलॉक सिस्टम अभी भी पूरा मंदिर को डिस्मेंटल कर सकता है, दूसरा जगह में लेके जाके फिर ऐसे एक हाथ में ऐसा भी है, पीछे हैंडल है. स्टोरी बोलता है रानी अलंकार करके राजों के लिए इंतजार कर रहा है, मेरे राजा आता है, मेरे श्रृंगार देखता है करके. यहाँ देखिए हाथ तोड़ दिया, बहुत बहुत डैमेज हुआ है. इधर कोई खिलजी मल्लिक कफर करके हमला नहीं किया, वैंडलिज्म मार्केट से बिफोर. So yeah, that was our trip, and I hope you loved this video, and if you did, do not forget to like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you so much for watching.